You're watching Reality Check, which is coming to you live from the beautiful city of Bhopal, the city of lakes, a peaceful city, but which has been in the headline ever since the BJP decided to field Pragya Thakur, accused of terror in the Malegaon blast case, as its candidate here against the Congress party's Digvijay Singh. Now, not only was the concern that by fielding someone like her, that this was normalizing somebody who faces serious terror charges, but also someone who is seen to be the extreme fringe of the Hindutva right wing. And sure enough, the kind of comments that she's been making, both against Hemant Karkare, the late Mumbai police officer who was killed in the line of duty in 2611, and also the fact that she claims credit for having been part of the Babri Masjid demolition, have brought her into the center of a storm. Just this evening, news has come in that an FIR has been filed against Pragya Thakur by the Election Commission because they felt that her response to her charges that she demolished the Babri Masjid were not satisfactory enough. Now, to defend the fielding of someone like her, a number of narratives have been put forward by the BJP, by her, as well as by her supporters. Let's go through each one to see if they measure up to the facts. So the number one claim is that there are no charges against her, that she's been acquitted of all the terror charges. The reality that the court, a special NIA court in Mumbai, has framed terror charges against her, which was done in October of last year. She's charged with two sections of the Unlawful Activities Act, which is the Anti-Terror Act, for both committing terrorism and for being a conspirator to terrorism, as well as a number of sections of the Indian Penal Code: murder, criminal conspiracy, promoting enmity between communities, and so on. Claim number two was the fact that she was victimized under Congress rule. The fact the charges were framed in October last year when the NDA was very much in power. Claim number three was that she was tortured in custody. Now, the fact is that both the Supreme Court and the National Human Rights Commission has found no evidence of torture. The Supreme Court in September of 2011 said there were no signs of torture. The NHRC, which ordered a police team to investigate the allegations of torture and custodial abuse, said the allegations were not substantiated by facts and the evidence on record from the prison court, hospitals, and the ATS. Despite this, when we came to Bhopal, we found that the entire BJP top brass is backing her. What does this mean for the BJP and what impact is this having on the ground? Let's watch. Ever since she was fielded from Bhopal, every day Sadhvi Pragya Thakur has come up with an incendiary comment. Day one on the late Hemant Karkare. जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा, उस दिन सूतक का अंत हो गया। Day 2, she told a TV channel that she climbed atop the Babri Masjid to raise it and was proud of it. 2 election commission notices and a national outrage has forced the BJP into damage control. Top BJP leaders met the Sadhvi last night, asking her to stop shooting her mouth off. Half her day was spent, we are told, in a Maun Vrat. We've been told that she will not be making any public statements today. She will not be talking to the media. She is in some sort of a Maun Vrat that she has taken. And this appears to be now the result of some kind of instructions that have come from the top, that the BJP leadership has said that for some time now, for at least till the time when her nomination is filed, that there will be this embargo. But we can see there are a number of people who are now all part of the team, who are there inside and outside. The media is also waiting, and we now have leaders of the BJP also who are handling her entire campaign. Dr. Vajpayee is here from the BJP. Dr. Sahab, so is waqt there has been some sort of gag order, is it, on Sadhvi Pragya? It's not like that. Actually, we are undergoing some preparations also. And we know this election is not important locally also for one constituency. It is going to raise certain questions which is important for the country, for the nation. No, so, but just to get the facts right, at the moment she is not speaking.
No, it's not like that. Right now she is under a puja. Mon. So, yeah, she has got a sankalp. Okay. So she, I think 1 o'clock or 2 o'clock that will be over. Then she'll be in the normal routine. We have got a election campaign mode also after that. So was it also because of all the controversial statements she's made that instructions have come from the top that now no more press for some time? Jain Saab, 2 hours is not going to be a remedy for it. So 2 hours is basically her personal decision. I see. Spiritual kind of thing. But after that, till 13, she has to speak. She is an orator. So she will be speaking. Yeah. Finally, in the afternoon, she began her public appearances with a visit to a religious event. अभी जी आप बताइए कि जो कहा जा रहा है कि आप पर एक तरह से बीजेपी ने गैग ऑर्डर लगा दिया, ऐसा कुछ है? बीजेपी ने आप पे गैग ऑर्डर लगा दिया है, मतलब कोई बोलने से रोका है क्या? बोलने से रोका है? नहीं, मैं चुनाव प्रचार में हूँ और मैं अपनी यथाशक्ति आपको बात कर लेती हूँ बीच बीच में। जी। क्या है कि मुझे अपनी शक्ति जनता के बीच में और इसलिए मैं अपने आप को ऐसे संग्रहित करती हूँ शक्ति। अच्छा। और फिर जाती हूँ राष्ट्र कार्य में। नहीं, लेकिन जो आपने एक सेकंड, एक आध सवाल, जो आपने वो कमेंट्स किए बाबरी मस्जिद तोड़ने पे और करकरे पे, वो क्या उस पे आप कायम हैं? अभी मैं अपने भाव में हूँ। ये सब तो क्या मना तो नहीं किया गया ऐसी बातों पर बोलने में, जो भी विवादास्पद बातें हैं? ऐसा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल था। चुनाव प्रचार के लिए मना क्यों करेगा कोई? जी, एक आखिरी सवाल था प्रज्ञा जी कि जो कहा गया था, जो टॉर्चर की आपने बात की थी, तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह बाकी एनएचआरसी जांच में टॉर्चर का कोई प्रूफ नहीं था, उस पे क्या कहेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उस पे कोई जवाब नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। The sadhvi may now be choosing her words with care. Instead, rising to her defense is no less than the state's former chief minister. Shivraj Singh Chauhan, former chief minister of Madhya Pradesh, senior leader of the BJP, is here with us in Bhopal. He was there himself at the time when the Sadhvi's candidature was announced. शिवराज सिंह जी, ये बताइए कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और अपने आप को एंटी टेरर मानती है, और अगेंस्ट टेरर, और आपने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया हु स्टिल फेसेस टेरर चार्जेस। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी भोपाल की 26 लाख जनता की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। देशभक्त हैं, भारतीय नागरिक हैं, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है भारत माता के चरणों में। टेरर चार्जेस केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मेरा तो आरोप ये है कि भगवा आतंकवाद का एक नया शब्द गढ़ा गया और इसके मास्टरमाइंड्स खुद दिग्विजय सिंह थे। कोशिश ये की गई कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया जाए, और सुनियोजित साजिश के तहत इस शब्द को गढ़ा गया। बिना किसी अपराध के एक निरपराध भारत की बेटी को जेल में रखा गया, कानूनों का दुरुपयोग किया गया, अमानुषिक यातनाएं दी गई। तो अगर उनकी बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी कैसी यातनाएं उन्होंने सही है। नहीं शिवराज जी, अगर मान भी लिया कि ये यूपीए कांग्रेस के जमाने का षड्यंत्र था, जो उनके खिलाफ चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं वो अभी हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक कोर्ट मुंबई कोर्ट ने फ्रेम किया है। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भारत के नागरिक है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनके खिलाफ आतंक के जो चार्जेस हैं, आप उनको गलत आप कहते हैं वो चार्जेस हैं ही नहीं, झूठे हैं। फंसाने की कोशिश की गई यूपीए की सरकार ने। उनको जैसी मानसिक प्रताड़नाएं दी है, वो भारतीय नारी का कितना अपमान किया जा सकता है और कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन ये देश वो देश है जहाँ एक द्रौपदी का अपमान किया गया था तो महाभारत हो गया था। ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जो उन्होंने बयान दिए करकरे साहब को लेकर कि मैंने शाप दिया
वो इस वजह से मर गए। उन उन्होंने बयानों- उन्होंने उन्होंने अब कहा कि ये अब मैं वापस ले रही हूं क्योंकि मेरे दुश्मनों को उससे फायदा हो वो रहा है। अपनी बात रखने में सक्षम है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। पर आप लोगों ने कल को समझाया था क्या उनको? नहीं, वो खुद समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और बरसों से काम कर रही हैं। वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं, सोशल वर्कर रही हैं, उनके पास डेवलपमेंट का भी विजन है। अब केवल एक चीज उन पर थोपी जाए ये उचित नहीं है। नहीं, एक चीज नहीं है। अब तो आपने ये भी सुन लिया कि उसके बाद उन्होंने ये बाबरी मस्जिद की बात की कि मैं खुद चढ़ के मैंने उसकी डेमोलिशन की, जिस पर ईसी पर भी नोटिस आया है। अपनी बात रखने में वो स्वयं सक्षम है, उन्हें किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाजपा की वो अगर कैंडिडेट हैं तो भाजपा उनकी सारी बातों को निजी रूप से कैसे डिसमिस कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उनके साथ हैं और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि भोपाल से भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। जहां तक वो अयोध्या का नहीं, एक सवाल था, केवल एक ही विषय पे नहीं, मैंने सोचा आप पूरा इंटरव्यू करेंगे। चलिए इस पे मैं आपसे और नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा से सवाल यह है कि जैसे दिग्विजय सिंह मैदान में आए, भोपाल बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती थी, पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल से इसको जीत रहे हैं, तो क्या और कोई कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिला? कोई भी कैंडिडेट, देखिए मैं आज कह रहा हूं 23 तारीख का परिणाम आप नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी दिग्विजय जी को पराजित करता। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया प्रज्ञा सिंह जी लड़े, क्या आपत्ति क्या है इसमें? मुझे लगता है इतना हंगामा क्यों है? देखिए, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दिग्विजय सिंह जी वो शख्स हैं जो आज भोपाल के विजन की बात करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट की। इनका विजन गड्ढों वाली सड़कें हैं, इनका विजन अंधेरा मध्य प्रदेश है, इनका विजन सूखे खेत है, इनका विजन बेरोजगार नौजवान है, इनका विजन मध्य प्रदेश का वंटा ढार है। और इसलिए उनको तो कोई भी पराजित करता। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार साध्वी जी को बनाया। और एक बात मैं ये कहूँ, साध्वी जी प्रतीक है। एक भारतीय महिला पर कैसे अमानुषिक अत्याचार यूपीए की सरकार में किए गए, इसका कैसे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई, कैसे भगवा को आतंक, देखिए हिंदुत्व और आतंक इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये हिंदुत्व है। इसको बदनाम करने की साजिश की पूर्ववर्ती सरकार ने, यूपीए की सरकार। जो आपने टॉर्चर की बात की, 3 कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट हो गई उस पर, नहीं, तीनों कोर्टों ने कोई उनको प्रूफ नहीं मिला कि टॉर्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, एनएचआरसी ने भी कहा कि कोई टॉर्चर का सबूत नहीं है। आज उनकी जो स्थिति है शारीरिक, आप देख लीजिए क्या हालत है उनकी जी। कई बार लगता है कि कोई इतना अमानुषिक कैसे हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। आखिर में बस, तो जैसे आप कह रहे थे कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं प्रज्ञा सिंह जी, आप सब उनके समर्थन में हैं, पूरी पार्टी नहीं, पूरी ताकत से साथ हैं। उनके ऊपर क्या आपको थोपा गया, आपके ऊपर ये कैंडिडेट, या नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर तय किया। देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान लो प्रोफाइल में रह के काम करता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य हूं जी। उसमें कितने लोग होते हैं आप जानते हैं जी। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। हर फैसले किए तो हम लोगों ने मिलजुल के किए, मिलजुल के। ओके, लेकिन एक आखिरी सवाल बनता है, क्योंकि आपने सारा मामला प्रज्ञा सिंह जी का कांग्रेस पर थोप दिया। 2010 में सुनील जोशी हत्याकांड में तो आपकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था प्रोटेक्शन वारंट पे दिल्ली में। वो पूरी तरह बाइज्जत उसमें से बरी हुई हैं, आप जानते हैं जी। शिवराज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू। And we are here with the Congress candidate from Bhopal, of course, Digvijay Singh, senior Congress leader, former Chief Minister, who just has arrived at the venue of a rally that you're about to address. Outside the temple. We should go outside the temple. And of course, the first thing that you did is you went to the temple to pay your respects. Well, I go to temples, dargahs, gurudwaras, church, everywhere. Right, that is as per your due. So, if we can just pause here for a second. So,
just to ask you that. So when this particular candidature was announced of Sadhvi Pragya, were you surprised, taken aback at all? Not at all. The choice of the BJP candidate is not in my hands. Right. But you know, the fact that she was pitted here against you because of this perception that you were the one who brought up this whole spectre of Hindu terror. Never. I have never called it a Hindu terror. I have been misquoted even by you. It is the Hindu terror. You meaning NDTV? Everyone. Everyone, acha. Not only NDTV or you. Everybody. Everybody. Okay. But the fact is, the person who used this word Hindu terror became a BJP MP, became the minister in Modi cabinet. You're talking of Mr. R.K. Singh? Yes, yes. Who was in his capacity earlier as Home Secretary under your government. Exactly. But you have used the term Sanghi terror. Yeah, I have used it. Because most of them who were involved in terror activities were from the RSS background. But the idea was not just to sort of portray you as someone who's coined the term Hindu terror, but that you're somehow anti-Hindu. I'm a practicing Hindu. How can a practicing Hindu be anti-Hindu? Tell me one BJP leader in the country who's got 7 temples in his house, who's got Akhand Jyot in 4 of the temples, who's done a Gordhan Parikrama 4 times barefoot, who has done a Narmada Parikram for 6 months, 10 days, who has done a Omkareshwar Parikrama twice without shoes, who observes Ekadashi Vrat, who visits Pandharpur since 1992 on Ashadi Ekadashi every year. How can they call me anti-Hindu? Say, how many temples in your house, you said? 7. 7 temples in your house? Yes, out of the 4 have got Akhand Jyot. But you know, you did float one conspiracy about Karkare's death, that, you know, that it was at the hand, but you kind of encouraged that it was at the hand of the RSS. No, wrongly quoted. Wrongly quoted? Never did that? Never did that. But overall, sir, before we go into the rally, the idea behind fielding her to try and create a polarization here in Bhopal, does that worry you? Not at all. Why not? You see, basically, their whole effort is not to win the election. Okay. But to make it an issue. So therefore, we have to be careful. Not to win the election? Yes. So what is the game here then? You ask any BJP leader, he'll tell you. They don't want to win? You ask them, no? What about the Modi factor here in these elections? Do you think that is going to come into a... Modi factor is not what it used to be in 2014. Not what it used to be. What are you campaigning on then? You're saying you're staying away from targeting her, you're staying away from going after all these charges against her? For what I have done in the last 40 years as a politician, as an MLA, as a minister, as a member of parliament, as a chief minister, as a state congress president, as a general secretary of the AICC. My political career is an open book. There is not a single corruption charge against me. There is no obvious criminal case against me except defamation suits filed by my BJP friends. That's all. But when Shivraj Singh Chauhan says you have the legacy of being a non-performing chief minister that earned you this Bantadhar moniker, to that you would say what? He's lying. He's lying. He's lying. But you were, sorry, I want to ask just Anurag before you come in, I do want to ask you, you yourself were somewhat, I don't know if reluctantly is the right word, but you were also kind of thrown into this seat. It may not have been your first choice. You could have fought from your own seat. I have always loved a challenge, Basu. Okay. In 1977, there was a strong anti-Congress wave. Everyone said you don't contest. I said, no, that's a challenge. I will have to contest, and I won. I love challenges. And when it was put before me, I said, fine, I'll do it. You don't think Kamal Nath was throwing you under the bus? Come on. We have been friends for the last 40 years. Why would he field you from here? It's such a tough seat. Because he knows my ability to win this seat. I want to ask you one thing, that, you know, ultimately it comes down also to who has the better ground game in an election, who has the better grassroots network, who has the better cadre. And to that extent... You are mistaken. Don't underestimate my cadre. No, that's what I'm asking you. Because the BJP always has a reputation of having a very strong cadre, grassroots network. Is that... Reputation amongst you. Okay. You have a good network here in Bhopal?
Congress? You find this, and every down to polling booth you've got. If you want the names and numbers, I'll give you. You'll give us all the names of your booth workers and karyakartas? Absolutely, with phone numbers. All right, okay. Digvijay Singh, we'll let you get on with it. So, thank you very much indeed. All the best to you as well. So, this was Digvijay Singh. Happy electioneering to you also. Oh, thank you. So, that was Digvijay Singh there. He says that he is here to win. Contests are tough, but he's going to give it a good shot. And he's saying the Congress does have a good enough network here. But if you just see the camera is panning here at the rally and the crowds here also, if we can just pan back and you can see that if we can pan back here and show you that Digvijay Singh has come to the rally. He is about to go on stage, but the fact is that there are a lot of empty chairs here as well. So this is also something that perhaps will be a matter of concern for the Congress, that Digvijay Singh, apart from his personality, apart from his clout as a former Chief Minister, whether or not he is going to be able to summon the crowds, whether he'll be able to take on the formidable might of the BJP election machine. That is something which is also going to be a crucial factor in this battle for Bhopal. In his speech, Digvijay Singh makes a familiar challenge to the crowd but gets an unexpected response. जो कहते हैं झूठ बोला वो हाथ उठाइए. अब जो कहते हैं कि मोदी जी ने सच बोला 15 लाख रुपए आ गए वो हाथ उठाओ. तुम्हारे खाते में आ गए? आ जाओ इधर आ जाओ. हम तुम्हारा नागरिक अभिनंदन करेंगे, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए. आ जाओ बेटा इधर आ जाओ. तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए. सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा. अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे क्या बात करते हो? यहाँ सब वोट किसको पड़ने वाला है? यहाँ पे साहब बीजेपी को वोट पड़ने वाला है पूरा. यहाँ जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके खुद खिलाफ आतंक के आरोप हैं. भाई साहब वो होंगे मीडिया में या इधर उधर, बाकी हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे क्षेत्र में फुल बहुमत से जीत रही हैं और 2 से 3 लाख हजार वोटों से जीत के जाएंगे. लोगों का बोलना होता है, समर ऐसा कुछ नहीं है. उनका प्रूफ अभी तक नहीं लेके आए हैं. आतंक का क्या प्रूफ है? नाम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे. हमको सिर्फ मोदी लाना है और देश का विकास चाहिए, हमको तरक्की चाहिए. सिर्फ मोदी को देख के वोट देंगे हम. और दिग्विजय सिंह जी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे कोई आपको वो नहीं है? सर 15 साल इनका शासनकाल देख चुके पहले हम. अच्छा. इस वजह बंडाधार मुख्यमंत्री वैसे, इसलिए प्रधानमंत्री जी को देखें जो गंभीर है देश के लिए. क्या आप चाहते हैं, क्या मूड बन रहा है? साध्वी प्रज्ञा है, दिग्विजय सिंह एक्चुअली साध्वी है, स्वाभाविक है कि हिंदुत्व है. वो अधिकतर बोलते रहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, ये भी सिद्ध होगा कि हिंदू आतंकवाद नहीं है. हिंदू हिंदू है, भारतवासी है. तो साध्वी जी की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है. आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं. न्यायालय में जब तक विचाराधीन मामला है, आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकता. अच्छा. अगर कोई किसी को 9 साल तक जेल में रही, अगर आरोप अगर इतने साक्ष्य होते तो 9 साल तक हो सकता है. चार्जशीट पेश करने होते तो उनके ऊपर टेरर का चार्ज है, वो एक्चुअली सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है. जब तक माननीय न्यायालय उसको दोषी ना ठहरा उस व्यक्ति को, हम उसको आरोपी नहीं. बट तो सीरियस चार्ज है टेरर का, आतंक का चार्ज है ना. उसमें क्या है कि NIA जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने भी उनको क्लीन चिट दी है. बट कोर्ट ने नहीं दिया. कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं अक्टूबर पिछले साल. अभी ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही विचाराधीन रहे तो अच्छा रहेगा. इस पर नरेंद्र मोदी जी पे भी गोधरा 2002 में जब अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया, और आज अमेरिका उनका वेलकम करता है. वेलकम करने के लिए खुद वहाँ के प्रेसिडेंट खड़े होते हैं भाई. तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगाए जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं. करकरे जी, उनके बारे में कुछ ऐसा अवैध टिप्पणी जो की गई है, मेरे ख्याल से ये समाज उचित भी नहीं है, न्याय उचित भी नहीं है. और आप काम रही के मुद्दे पे क्यों हैं? आप विकास के मुद्दे पे बात करें. हमारा ये रुझान है, पिछली बार जो मैंने बीजेपी को किया था, बट जब मैंने देखा कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और एक दूसरे से आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये चीज़ें हैं, वो सारी
सारी चीज़ समस्याएं हैं, वो समस्या हल नहीं हो रही। मेरे ख्याल से यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। हमारे हिसाब से तो दिग्विजय सिंह जीतना चाहिए। दिग्विजय सिंह, कंडीशन ऐसी बन रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि प्रज्ञा भारती ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिससे उनके खुद बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब वो खुद विरोध कर रहे हैं। सागर से कर रहे हैं और भी कई जगह से कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे लोकल का है तो कमलनाथ जी ने करके बताया वो जो सरकार गरीबों के हित में काम करेगी साहब, हम तो उससे सहमत हैं। 10 साल सीएम रहे, उन्होंने अच्छे काम करे हैं। दिग्विजय सिंह को जीतना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा से आप इम्प्रेस नहीं हैं? उनके बयान बहुत गलत है। So given the fact that as we found there was a very large section of voters here in Bhopal, people here in Bhopal who were supporting the BJP, who were supporting Narendra Modi, it still begs the question, why then did the BJP still go ahead to choose somebody like Sadhvi Pragya? What does it say about the BJP's future politics when it comes to polarization and when it comes to raising divisive issues? That's something which the party will have to think hard about. But that's it from Bhopal on the special edition of Reality Check. Thanks so much for watching. Good night.